Ellargu Namaskara. My name is Vidya Shankar, a proud volunteer at Project Step 1. So, what is Project Step 1? Project Step 1 is a volunteer driven non-profit collective of individuals from startup companies with volunteers and doctors from across India to provide free access to healthcare via telemedicine to the citizens affected by COVID-19 pandemic. During the last 120 days, Project Step 1 has spread out in 12 states and has made a significant impact in the fight. To give some figures and statistics, we are a team of 6,500 plus doctors with the 33 languages covered, 350 volunteers team, 32 volunteer companies and organizations, and have been very successful in reaching 3 million citizens till date. Over 200,000 teleconsultations, helped in the prevention of at least 2 lakh contacts. Isn't it wonderful to just know, understand, and track Project Step 1? Project Step 1 appeals to the citizens out there watching this webinar to come forward for volunteering and join the doctors' force to combat COVID-19 through teleconsultation. Recently, Shri Amitabh Bachchan ji has tweeted that the place of worshipping is closed because God is busy treating COVID. As Indian philosophy says, Vaidyo Narayano Harihi, the respect given to doctors in Indian culture is the mark of our Indian philosophy. I thank all the doctors who are on front line to fight COVID-19, appeal to other doctors to join Step 1 and help us in providing free access to healthcare via telemedicine. And coming to today's webinar, it's all about how school students can protect themselves and others from COVID-19. We all know and heard that बच्चों का पहला शिक्षा मंदिर घर होती है और माँ शिक्षकी होती है. Home is the first school for every child, and parents have 100 questions related to the safety of their children during the pandemic, and sending them to school is out of question. To answer to all your questions and to share their expertise, we have 2 important young doctors on our platform today. I will now request Dr. Ravi Kiran, who is a very senior consultant of pediatrics and neonatology, who has been working with Department of Institute of Women and Child Health at Sakra World Hospital, Bangalore, to introduce Professor Sunil Raina. Over to Dr. Ravi Kiran, sir. Thank you. Namaste. Welcome, everybody. First of all, I would thank Project Step 1 and Abhinava Events for giving this opportunity to introduce a speaker like Dr. Sunil Kumar Raina for the talk which is scheduled for today. So, as we all know, we are in the midst of this pandemic. We all know we see in and around us is a fear of corona, and people behaving a little weirdly, cynically, or exaggerated fearfulness is going on everywhere. So if we see that in front of us, imagine what could be happening to the kids who are at their homes, facing the same parents with all their idiosyncrasies. So as parents, it's our primary responsibility to pass on a valid information to the child without an undue fear, and at the same time teach them the basics of how to protect themselves and the community, and how they can themselves feel that they are contributing to alleviate the corona monster. So that being the situation, handling kids is not easy. Kids, when they decide they want something, they want it. And when they have a fear in the middle of the night, only probably a few grandmothers can alleviate their fears very successfully. And handling the psychology is a very uphill task. The person who has to talk about this must be well aware of the ground scenario, must have done a lot of ground research, must have been involved in a lot of community level activities. So I'm sure that none other than Dr. Sunil Kumar Raina can address the scenario better about this. So yeah, again, thanks to Vidya Shankar for roping in Dr. Sunil Kumar Raina for such a talk. Regarding Dr. Sunil Kumar Raina, he is a very towering personality in terms of what I can tell. He is the HOD of community medicine in Dr. Rajendra Prasad Government Medical College at Tanda, and he has
a whopping number of researchers to his credit, close to 270 research items and about 700 citations. All these are more of scientific terminologies which may not appeal much to the parents, but then yes, scientific circles can easily recognize what he is based on what his credentials are. So that being the case, I think Dr. Sunil Kumar Raina is a person who is fit enough to handle the situation, and he will be taking over you to guide you through how we teach our kids to learn about corona, not to panic about corona, and how they can feel a sense of fulfillment in themselves handling corona, and to spread the good, spread what is to be done, what is not to be done in and around. And involvement is more important for a child to learn anything and to proceed with that further. So, sir, please, over to you. So, over to Dr. Sunil Kumar Raina for further of this session. Thank you, Dr. Ravi Kiran, for your nice words. Actually, they are very complimentary and flattering. I'm also thankful to Dr. Vidya and the Abhinav events. I have been associated with Abhinav events for long now. Thankful to Step 1 for again offering me the opportunity to talk to young kids. It's always a pleasure to talk to young kids, because when you talk to kids directly or indirectly, you feel you are young, and it's always a pleasure to be young, feel young. So that being the case, I'm thankful to Vidya, thankful to Step 1, and thankful again once again to Dr. Ravi for his kind words. Now, last time we had a webinar with Step 1. Therein I realized that the medium of my communication was primarily English, and I received a few phone calls after the webinar was completed, and people started asking me, why should not it be something that is common that is easily accessible to common masses? So what I will try to do today is maybe use a mix of language, use some bit of English, and within that interspersed will be some bit of Hindi, so that it reaches a wider audience. So that being the case, we start with what we are to do today in this webinar. Now, as Dr. Ravi rightly pointed out, unless and until kids are involved, unless and until kids feel involved with the teaching learning process, unless and until they feel they're a part of a teaching learning process, their chance of picking up the health message or picking up any message is difficult. जब तक वो चीजों को करके नहीं देखे, जब तक उनको लगे नहीं कि हम इस काम में इन्वॉल्व है, तब तक उनकी एंटाइटलमेंट, उनकी कमिटमेंट टू अ particular health education material or a particular health awareness system won't be there. So what we will try to do is we will try to talk about certain tasks that students will do at home, perform at home under the guidance of their parents or teachers in their schools, because schools are closed, so most of these have to be monitored indirectly or will be monitored by the parents. And these tasks will help them understand what is the importance of various preventive measures that we take up in prevention of coronavirus disease. Right. But before we move about these tasks, we talk about these tasks, we need to understand why should kids be taught about it. बच्चों से इस बारे में बात करने की जरूरत क्या है? Why do we need to talk to kids? If you look at the numbers, अगर आप सीधे numbers को देखते हैं, तो roughly 20%, 15 to 20% of Indian population is contributed by kids going to the school. So school going kids is Indian population का एक substantial number है. और अगर आप आज तक की कोरोना वायरस और COVID-19 डिजीज के पैंडेमिक को ट्रैक करें, तो this group of people, this section of population has been more or less kept isolated. इसके साथ directly कभी भी किसी ने बात नहीं की है. We have not communicated directly with them. We have been communicated to healthcare workers, we have been communicated to factory workers, we have been communicating to office goers, but we have not directly communicated to school students. And school students, as I said, is a large chunk, it's a major chunk of population. So it's important that we communicate to them. If we are making aware school students about COVID-19 disease, we are ensuring that a large population of our India, our country is educated, is made aware of the disease. That's one part of it. Second is that students today are overwhelmed with information. There's an information pandemic itself. It's an infodemic that we talk of. Information comes to them primarily through internet platforms like the WhatsApp, like Facebook, or through the banned apps like the TikTok that used to be there. So information comes to them indirectly through internet mediums. But whether this information is correct or not, it's difficult for them to validate it.
So unless and until they speak to their parents or they speak to their teachers, the validation of this information is not proper. So there has to be proper information that is communicated to these students. So one, the numbers is high. Second, there has to be an information that is valid that has to be communicated to these students. Third, and that is very important, as again Dr. Ravi put it across, parents, because of COVID-19 disease, parents are anxious. Parents, if you look at parents these days, they will be listening to news, they will be using their telephones for newer and newer information on COVID-19 disease. So parents seem anxious. And once parents are anxious, parents appear anxious, the kids also become anxious. They also feel anxious. Unme bhi thodi si dar, thode se panic buttons stimulate ho jate. They also fear the fact that this is something big that is going on. So the third important thing is that kids are anxious. But most important, in सबसे ज़्यादा important जो मेरे लिए, इन तीन चीजों से ज़्यादा, the numbers, the anxiousness, उस सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो important चीज है kids को लेकर, वो ये है कि kids are the best carriers of information. So if I teach a kid or if I make a kid aware, the chances are that the entire family will be made aware. Kids carry health information the best. They will take the information to their families. They will take their information to their parents, to mother, to grandfather, to people around them. And that information travels much faster and much quickly as compared to the information that is given to the parents. So the key is that if we educate the kids, the chances are that we are educating an entire family. That's why it's very important that we have kids as an audience and we are able to communicate to kids. So these are four primary reasons why kids should be taught about, what kids should be made aware about this disease. But also the fact, beyond these 4 points, also the fact that kids themselves are vulnerable to this disease. बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है. Although research across the world has shown कि बच्चों में ये जो बीमारी होगी उतनी सीवियर नहीं होगी, उतनी मैनिफेस्ट नहीं करेगी सीवियरली जितना बड़ों में करेगी. But kids will be affected. बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है, बच्चों में भी मोर्टेलिटी हो सकती है. And importantly, बच्चे इस डिजीज को कैरी भी कर सकते हैं. So they can carry the disease to their parents, to their grandparents, to their friends. So the kids are important beyond those 4 points because of the fact that they are also vulnerable. उनको भी ये बीमारी हो सकती है. So that's why this is important that we speak to kids. It's important that we communicate to kids, we inform them, we educate them about this COVID-19 disease. Now, once we have given the reasons why these kids are involved, we need to understand how this webinar will unfold. As I said, what we are trying to do is we have tried to develop a bit of tasks. We have tried to develop a bit of tasks for students who can perform them under their guidance of the parents and understand the implication of different interventions that are being currently used in prevention of COVID-19 disease. Right. So we will talk of them one by one, but before that, we just need to go through what exactly is COVID-19. So COVID-19 is coronavirus disease, COVID, 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 coronavirus disease 19. क्योंकि 19 में आया, 2019 में आया, तो 19 है, और कोरोना वायरस कराता है, तो इसलिए COVID-19 है, coronavirus disease 19. Now, most of the symptoms of coronavirus, जैसे आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लोगों ने बात भी की होगी इसके बारे में. So most of the symptoms of coronavirus are like the symptoms of other influenza-like illnesses. जो common influenza-like illnesses होती है, उनके जैसे जुकाम हो सकता है, जैसे खांसी हो सकती है, फीवर हो सकता है. तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स उसके हैं. लेथार्जी हो सकती है, बाद में ऐड हो गए कि टेस्ट में फर्क पड़ सकता है या स्मेल में फर्क पड़ सकता है. These were the later additions to these symptoms. But all said and done, most of these symptoms are very common symptoms and are more or less same or similar to what happens with regard to common influenza-like illnesses, जो हम रोज आमतौर पर देखते हैं. जैसे जुकाम के जैसे बीमारियां होती है, उन्हीं के जैसे सिम्टम्स है, उससे थोड़ी सी एडिशन में कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं, बट मोर और लेस वैसे ही सिम्टम्स है. ठीक है. सो कोविड-19 इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस कराता है, 2019 में आया, और सिम्टम्स मोर और लेस वैसे हैं जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के हो सकते हैं. अब कोरोना को कोरोना क्यों कहते हैं, इस पे भी बड़े लोगों ने बड़ी बातें की है, क्योंकि वो ताज जैसा होता है, इसकी शेप बाहर से ताज जैसी हो सकती है, क्राउन जैसा होता है, इसलिए इसको कोरोना वायरस होता है. बट वी वोंट गो इनटू दैट, उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे. हमारा फोकस सिर्फ 2 चीजों पर रहेगा. एक कि बीमारी कैसे होती है और बीमारी से बचाव कैसे करते हैं, और बचाव करने के लिए जो हमने इंटरवेंशंस डेवलप किए हैं उनको हम कैसे सीखें.
तो पहली चीज है जो हमने सीखनी है या हमने जो जाननी है कि इन्फेक्शन होता कैसे, हाउ इज द इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड। द फंडामेंटल पॉइंट जो अभी तक अक्रॉस द वर्ल्ड जो एक पॉइंट पे जिस पे एग्रीमेंट आया है वो है कि इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। इसको समझना पड़ेगा कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का मतलब है। पिछले कुछ दिनों में एयर स्प्रेड का भी बात हुआ था, बट वी वोंट गो इनटू दैट, वी विल स्टिक टू what has been proved and conclusively proved, and that is use of these spread through respiratory droplets. तो आप लोग से मैं एग्जांपल शेयर करता हूं। आप लोग सब कभी ना कभी कार में ट्रैवल किए होंगे, मतलब यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड इन अ कार एट सम पॉइंट इन टाइम, इन विंटर, समर मंथ्स, या आप लोग कभी अपने आईने के सामने खड़े हो गए होंगे। तो आप यू रिकलेक्ट द एक्सपीरियंस, आप अपनी याद एक्सपीरियंस को रिकलेक्ट करो और सोचो कि जब आप आईने के सामने या कार के शीशे के सामने खड़े हुए थे एंड यू ब्लोड एयर ऑन टू द विंडो, जो शीशा था, चाहे वो कार का शीशा था या आपके सामने जो मिरर था, उस पर आपने हवा मुंह की ब्लो की, ऐसे करके ब्लो की। एंड वंस यू ब्लो दैट, बच्चों को आदत होती है कि वो उस पे, उस एरिया पे जहां पे वो ब्लो किया होता है एयर, उस पे अपना नाम लिखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज एस, तो व्हाट वी डू इज दैट वी ब्लो एयर ऑन अ विंडो पैन or we blow air on the mirror and then I write my S, the initials on it. So what do you recognize? What do you see at that point in time? जब वो अपना S नाम लिखते हैं उस पे, या आपका जो भी नाम हो, जब वो उस पे लिखते हैं, तो आप देखते हैं कि उस S के आसपास छोटे छोटे पानी की बूंदे होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स उसके आसपास होते हैं। So these water droplets are in essence respiratory droplets. आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के साथ, जब मैंने एयर को बाहर फेंका, जब मैंने ब्लो किया एयर को उस विंडो पैन पे या उस मिरर पे, तो उस एयर के साथ जो चीजें बाहर निकली वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, राइट। अब ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आते कहाँ से? ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स लंग से भी आते हैं, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से भी आते हैं, नाक से भी आ सकते हैं, और इन्हीं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में वायरस ट्रैप्ड होता है। इन्हीं रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स में वायरस ट्रैप्ड होता है। तो जब हम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बाहर निकालते हैं, उसके साथ वायरस भी बाहर निकलता है। क्लियर? अब एक आदमी ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कब पैदा करता है? When does a person generally produce these respiratory droplets? So generally speaking, आमतौर पे कहे तो when we talk, when we sing, whistle, when we sneeze, when we cough, at all points in time, we produce these respiratory droplets. इन respiratory droplets को हम बाहर फेंकते हैं। जब हम बात करते हैं तो हम बहुत कम respiratory droplets बाहर फेंकते हैं, या जितने भी फेंकते हैं वो बहुत दूर तक नहीं जाते हैं। But when we cough, the number and the intensity of the respiratory droplets increases. When we sneeze, again, the intensity goes much higher than when we cough or when we talk. So as we move from talking to whistling, to sneezing, to coughing, to sneezing, the intensity, the spread force of respiratory droplets increases. ठीक? So अब मान लो कि there is somebody who is having this infection, जिसके पास ये infection है, जो COVID-19 disease से संक्रमित है, जिसको ये इन्फेक्शन है, somebody who is infected with COVID-19 disease. अब ये COVID-19 डिजीज का पेशेंट जब भी बात करेगा, जब भी गाना गाएगा, जब भी विसल करेगा, जब भी कफ करेगा, जब भी स्नीज करेगा, तो ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के कोरोना वायरस से लेडन, कोरोना वायरस के से संक्रमित जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, उनको बाहर फेंकेगा। He will put them into the atmosphere or he put them into the environment around him, उसके आसपास का environment होगा। अब इमेजिन करो कि जब ये कोविड-19 का पेशेंट, कोविड-19 डिजीज से जो संक्रमित पेशेंट होगा, जब ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बाहर फेंकता है, तो उसके सामने अगर कोई आदमी होगा, उसके सामने एक और आदमी होगा जिसको बीमारी नहीं है, तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स उसके चेहरे पे पड़ सकते हैं, उसके मुंह पे पड़ सकते हैं, उसके नाक पे पड़ सकते हैं, या उसकी आंखों पे पड़ सकते हैं। So these respiratory droplets will hit his face, fall on the mouth, on the nose or on the eyes. From there, this will be picked up by that person. वो आदमी उनको इनहेल करेगा और उसके थ्रू उसको इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर? इस प्रोसेस को कि जिसमें एक संक्रमित, एक इन्फेक्टेड पर्सन ने दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को डायरेक्टली थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन दिया, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन और डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन और डायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो पहला तरीका हुआ कि हमने डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू एक इन्फेक्शियस आदमी ने एक नॉन इन्फेक्शियस आदमी को
कोरोना वायरस डिजीज का जो पार्टिकल था, जो ऑर्गेनिज्म था, वो दे दिया। तो इसको हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन बोलते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जब ये स्नीज करता है, कफ करता है, बात करता है, तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, आपके टेबल पे गिरेंगे, जमीन पे गिरेंगे, आपके डोर नॉब्स पे गिरेंगे, आपकी खिड़कियों पे गिरेंगे, आपके सामान पे गिरेंगे, और दूसरा आदमी जिसको इन्फेक्शन नहीं है वो उनको छुएगा, अपने हाथ से छुएगा उन सरफेसेस को जिन सरफेसेस पे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं। So once it touches those respiratory droplets, the respiratory droplets में जो इन्फेक्शन है वो उसके हाथों में लग जाएगा। क्लियर? सो somebody जिसका इन्फेक्शन है, उसने बात की, उसने खांसा, उसने स्नीज किया, छींका, और वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स दे फेल ऑन अ सरफेस, टेबल टॉप पे मान लो गिर गए, और आप आए और आपने इस टेबल टॉप पे हाथ लगा दिया, और आपने इसको छुआ टेबल टॉप को। अब क्योंकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कुछ देर तक ऐसे ही रह सकते हैं, वायबल रह सकते हैं, मतलब इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने के लिए कैपेसिटी रहती है इनमें, तो जब आपने छुआ उनको, वो आपके हाथों पे लग जाएंगे। और आपको आदत है, आपको, मेरे को, हम सारे ह्यूमन बीइंग्स को आदत है कि हम अपने मुंह, नाक, अपने आंखों को बड़ी बार टच करते हैं। तो मैंने क्या किया, इन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो मेरे हाथों को छुए, और उसके बाद मैंने अपने मुंह को टच किया, नाक को टच किया, तो इनडायरेक्टली ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स मेरे मुंह, मेरे नाक को लग गए। हालांकि किसी ने मेरे ऊपर छींका नहीं था, खांसा नहीं था, किसी की बात से मेरे को इन्फेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स नीचे गिरे थे और मेरे हाथ में लग गए थे, और मेरे ही हाथ, जो गंदे हाथ थे जिनमें रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स थे, ये मेरे हाथों को लग गए, और मेरे हाथों से मेरे मुंह या मेरे नाक को लग गए, बिकॉज ऑफ विच ट्रांसमिशन ऑकर्स। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। सो देयर इज अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एंड देयर इज एन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। बट जो मुद्दा है, जो बेसिक फंडामेंटल रहेगा, वो यही है कि इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही होगा, वो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। क्लियर? तो हमारा जो बचाव होगा, जो हम बचाव की कोशिशें करेंगे, एनी एफर्ट टू प्रिवेंट दिस डिजीज विल रेस्ट ऑन हाउ डू वी प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो एक आदमी से दूसरे आदमी को रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कैसे जाए, कैसे कम तरीके से जाए, वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का वही हमारा बचाव का तरीका है। अब अगर हम उस एग्जाम्पल की फिर याद करें, जहां हमने बोला था कि हम ब्लो करते हैं एयर अपने गाड़ी के विंडो पेन पे या अपने मिरर पे, तो आप याद देखोगे कि उसमें कुछ रेस्पिरेटरी, उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। सो देयर आर सम स्मॉल ड्रॉपलेट्स एंड सम बिगर ड्रॉपलेट्स। सेम विद रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, तो कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, राइट? सो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कैन बी बिग, दे कैन बी स्मॉल, और एंड दे कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, राइट? इसके अलावा जो एक चीज जो इंपॉर्टेंट है समझने की इस बीमारी में, जो बाकी बीमारियों में उतनी कॉमन नहीं है, जो बाकी इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीजेस में कॉमन नहीं है, वो है कि ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस, जो कोविड-19 का जो वायरस है, उसको लोग एसिम्प्टोमेटिक फेज में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है? एसिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है कि ओवर्टली सिम्प्टोमेटिक नहीं होगा। इस पे मतलब मैंने बड़ी बार डिबेट भी किया है, वी हैव रिटन ऑन दिस एज वेल, हमने लिखा भी है इस पे। कभी कभी इतने माइल्ड सिम्टम्स होते हैं कोविड-19 डिजीज के कि पेशेंट उसको इग्नोर करता, उसको पता भी नहीं चलता उसको कि कोविड-19 डिजीज हो गया। एंड एज सच ऑल्सो, अगर हम पूरे कोविड-19 डिजीज के स्पेक्ट्रम को देखें, अगर इस बीमारी के स्पेक्ट्रम को देखें, तो 100 में से 80 लोग ऐसे होंगे जिनमें बहुत माइल्ड सिम्टम्स होंगे या कोई भी सिम्टम नहीं होगा। उसमें बीमारी होगी, उसको इन्फेक्शन होगा, बट ही और शी में नॉट शो एनी सिम्टम्स, वो सिम्टम्स दिखाएगा नहीं। मतलब उसमें खांसी नहीं होगी, उसमें छींकेगा नहीं, उसको बुखार नहीं होगा, उसको लेथार्जी नहीं होगी, फटीग नहीं होगा, लॉस ऑफ टेस्ट नहीं होगा, लॉस ऑफ स्मेल नहीं होगा, ये चीजें नहीं होगी, लेकिन फिर भी बीमार होगा। ऐसा व्यक्ति भी, पर्सन हु इज एसिम्प्टोमेटिक, वो भी डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है। ऑल्दो द परसेंटेज में भी स्मॉल, नंबर्स स्मॉल हो सकते हैं, लेकिन वो भी डिजीज को ट्रांसमिट कर सकता है। ये थोड़ा इसमें इस बीमारी के लिए खास है। ठीक है? बीमारी ट्रांसमिट होगी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ओनली, और बीमारी एसिम्प्टोमेटिक भी ट्रांसमिट कर सकता है और सिम्प्टोमेटिक भी ट्रांसमिट कर सकता है, राइट? और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन वही होंगे, जब कोई बात करेगा, जब कोई छींकेगा, खांसेगा, गाना गाएगा, विसल करेगा, थूकेगा, वही मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन से होगा, और कोई ट्रांसमिशन मोड नहीं। तो हमारी जो प्रोसेस होगी, हमारी मोस्ट प्रोसेसेस ये होगी
कि इन मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन को हम कैसे बचाएं। क्लियर? तो तीन चीजें तो आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी, जिसको जो इससे बचने के लिए तीन चीजें आपने बहुत सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, न्यूज में भी आ रहा है, अखबारों में भी आ रहा है, ठीक है, और आपके जो जो फ्रेंड्स होंगे वो भी आपसे बात करते होंगे इन चीजों के बारे में। तीन चीजें आपने बहुत सुनी होगी। वन इज सोशल डिस्टेंस। ये हालांकि पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो मैं इस वर्ड को अवॉइड करता हूँ, सोशल डिस्टेंस वर्ड को, ठीक है। सो सोशल डिस्टेंस एक सुना होगा आपने। दूसरा वर्ड आपने सुना होगा कि मास्क पहनो, ठीक है, ये दो चीजें सुनी होगी। तीसरा चीज जो आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, वो सुना होगा आपने हैंड वॉश करो। सो अब हैंड वॉश करो, अब मास्क पहनो और सोशल डिस्टेंस करो। दो चीजें जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ऐड की है इन चीजों को, इन तीन चीजों को, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, वो है टू मेक ए कॉन्टैक्ट लिस्ट। एक कॉन्टैक्ट की लिस्ट बनाएं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट लिस्टिंग। तो वो लोग जो डायरी लिखते हैं, जो जर्नल्स बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत अच्छा होमवर्क होगा, अपना एक स्मॉल प्रोजेक्ट होगा टू मेक ए कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो चौथी चीज हुई आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट करनी है। और पांचवी चीज जो आपने करनी है इंफॉर्मेशन चेक, वो भी आपके लिए अच्छा एक एक्सरसाइज होगा, होम बेस्ड एक्सरसाइज। तो इन पांच चीजों को हम इस वेबिनार में सीखेंगे, इनको कैसे कर सकते हैं, एंड देन यू कैन रिपीट देम एट योर होम विद योर पेरेंट्स, under the guidance of your parents or elder brothers and sisters, right? But as I said, the fundamentals will stay the same, कि हमने respiratory droplets के transmission को एक से दूसरे को जाने से बचाना है। पहला चीज हम बोलेंगे social distancing, जो मैंने बोला मुझे पसंद नहीं है। लोग इसको social distancing भी बोलते हैं, लोग इसको keep the distance भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ infection prevention distance, infection preventing distance, वो डिस्टेंस जो इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को बचा सकती है। ये ज्यादा इजी है समझने में एज कंपेयर टू द टर्म सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग से बेटर टर्म अंडरस्टैंड करने में है इन्फेक्शन प्रिवेंटिंग डिस्टेंस, राइट? सो व्हाट इज इन्फेक्शन प्रिवेंटिंग डिस्टेंस एंड हाउ डू वी रेप्लिकेट अ मॉडल फॉर दैट? उसके लिए एक टास्क कैसे मॉडल करते हैं, ठीक है? तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने पास एक पानी का बाउल ले सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये तो कप है, बट एक पानी का बाउल ले सकते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा बाउल। एक पानी का बाउल लेंगे और उसमें पानी भरेंगे ब्रिम तक, टॉप तक उसमें एक पानी भरेंगे। सो से फॉर एग्जांपल दिस इज योर बाउल ऑफ वाटर विच इज फुल टू द ब्रिम, ठीक है? और इसको अपने पास लाएंगे, अपनी चिन के पास लाएंगे, टू योर चिन। सो दिस इज मोर और लेस मच क्लोजर टू योर नाक और मुंह और नाक के बहुत क्लोज आ गए। अब क्या करना है, ये थोड़ा बाउल इतना बड़ा हो जिसमें आपका हाथ आ जाए, आपका हाथ इसमें घुस सके, राइट? तो आपने एक फिस्ट बनानी है, फिस्ट बनाई और इस बाउल के अंदर डाल दी, राइट? लाइक समथिंग लाइक दिस। इसके अंदर तो जा नहीं रहा क्योंकि ये थोड़ा, इसका जो माउथ है थोड़ा टाइट है। सो फॉर एग्जांपल इट इज अ वाइडर माउथ, इट शुड बी अ वाइडर माउथ जिसके अंदर आपका हाथ चला जाए। तो मैंने ऐसे रखा, इसके अंदर अपना हाथ किया। अब क्या करूंगा मैं, इससे जो मेरा हाथ है उसकी उंगलियों में पानी लग जाएगा। इफ यू थिंक, इमेजिन इट, देयर विल बी वाटर ऑल ओवर माय फिंगर्स which are within this pot. इस pot के अंदर जो मेरी फिंगर्स है उसमें पानी लग गया होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, यहीं से बैठ के अपने फिंगर्स को फ्लिप करूंगा, ऐसे करते जाऊंगा। सो आई विल कीप फ्लिपिंग दिस 2-3 टाइम्स, 2-3 बार में इसको फ्लिप करूंगा। पानी में भिगोया और फ्लिप किया, ठीक है? ये प्रोसेस आप कैसे करेंगे वो थोड़ा समझने वाली बात है। तो आप क्या करेंगे कि आप अपने घर में किसी दीवार के पास जाएंगे, प्रेफरेबली गो टू द बाथरूम, क्योंकि वो वेटेस्ट पार्ट होता है, वहां पे आपको घर में डांट भी नहीं पड़ेगी। दूसरी दीवारें खराब करोगे तो हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको डांट दे उस पर। तो गो टू द बाथरूम विच यू कैन वेट थ्रू दिस प्रोसेस, जिसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या करें, एक दीवार चुने, अपने अपने घर में एक दीवार चुनी है, उस दीवार के सामने खड़े होंगे और उस दीवार से पीछे जाते जाते आपने अपने स्टेप्स को मार्क करना है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, पीछे पीछे तक मार्क करना है। तो 1 स्टेप के बाद निशान डाला, 2 के बाद निशान डाला, 3 के बाद निशान डाला, 4 के बाद निशान डाला, 5 के बाद निशान डाला, ऐसे मे बी वी गो अप टू 10 स्टेप्स। सो रफली हम मिमिक करेंगे कि हम 0 मीटर से लेकर 1 से 1.5 मीटर तक की डिस्टेंस कवर कर लें या 2 मीटर की डिस्टेंस तक कवर कर लें। अगर आपके पास रूलर होगा, आपके पास मेजरिंग टेप होगा, आप मेजरिंग टेप से इसको मेजर कर सकते हैं कि आपने 1 फीट की डिस्टेंस पे मार्क किया, 2 फीट की डिस्टेंस पे मार्क किया, 3 फीट की डिस्टेंस पे मार्क किया, 4 फीट की डिस्टेंस पे मार्क किया और 5 फीट की डिस्टेंस पे मार्क किया, 6 फीट की डिस्टेंस पे मार्क किया, ऐसे मार्क्स डाल दिए।
अगला प्रोसेस क्या करना है, आपने यही कप खड़े होके, ये जो आपके पास बर्तन था, पॉट था, वो खड़े होके जाना है, चिन के सामने रखना है और उस दीवार के सामने जाना है, और आपने हाथ उसमें डाले पॉट में और उस दीवार के सामने फ्लिप की 2 or 3 times, you flip on that wall. पानी से सने हुए आपके the hands dripped in the water, you flip those hands and you see what happens to the wall. Wall में क्या होता है, तो आप देखोगे कि वॉल पे पानी की ड्रॉपलेट्स जो है ये चिपक जाएंगे, they will get onto that wall. वॉल पे वो चिपक जाएंगे. आपने क्या करना है, उसको एक बड़ा सा सर्कल से एनसर्कल करना है, वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कहाँ कहाँ गए, ठीक है. और आप कॉपी में उसको नोट करिए कि इसमें छोटे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स थे, वाटर ड्रॉपलेट्स थे, बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स थे, और कितना एरिया को कवर करते हैं, ठीक है. अब उसको साफ करिए एंड मूव बिहाइंड. पहले आपने 1 फुट पे यही काम किया, अब उसको 2 फुट पे करिए, फिर से ऐसा ही काम करिए, रिपीट करिए इस प्रोसेस को, एंड देन सी व्हाट हैपेंस टू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. ये उतने ही बड़े हैं, उतने ही ज्यादा हैं जितने पहले स्टेप पे थे, या उससे कम हुए. तो नोट दिस अगेन इन योर कॉपी. मूव फर्दर, ठीक है, और एक ऐसी जगह तक पहुंच जाइए, सो मे बी फ्रॉम 1 foot to 2 foot to 3 foot to 5 4 foot to 5 foot, you reach a place. आप एक ऐसी डिस्टेंस पे पहुंचेंगे जहां से जब आप इन वाटर ड्रॉपलेट्स को फ्लिप करेंगे तो दे विल नॉट फॉल ऑन दैट वॉल, वो वॉल पे नहीं गिरेंगे. क्लियर? ये आपने अपनी जर्नल में नोट किया कि मैंने देखा, आपने देखा कि जब मैं 4 फुट डिस्टेंस उस दीवार से चला गया पीछे, तो मेरे जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे, जो मैं पानी से फ्लिप कर रहा था, वो उस दीवार पे नहीं गिर रहे थे. क्लियर? नाउ दीज वाटर ड्रॉपलेट्स जो हमने पानी से पैदा किए, अपनी चिन के पास से पानी से पैदा किए, दे मिमिक रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. इनको आप रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स मानो. तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स भी ऐसे ही डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ही आप दीवार से दूर दूर जा रहे थे, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे, इनका जो पैटर्न है छोटा होता जाएगा, और इनकी जो डेंसिटी है छोटी होती जाएगी, और ये वॉल पे जो निशान छोड़ रहे थे वो कम इंटेंस थे जितना पहले वाले में इंटेंस थे. ठीक है, सो 1 फुट पे ज्यादा इंटेंस थे, ज्यादा डेंस थे, और 5 फुट पे कम डेंस थे. क्लियर? सो दिस इज what we mean by distancing from others in infection or keeping an infection prevention distance. अब आप ऐसे मान के चलो कि आप या मैं या हम लोग कोविड-19 को स्प्रेड कर रहे हैं, इन्फेक्शन है, और जो हमारी दीवार थी जिसपे हमने जो पानी की बूंदे फ्लिप करके छोड़ी, ये दूसरा व्यक्ति था, दूसरा आदमी था. तो जो ही मैं उससे पीछे हुआ, जो ही मैं दीवार से पीछे पीछे होते गया, उसके इन्फेक्ट होने के चांसेस कम होते गए. ठीक है, अब हम इसको नेचुरल सिचुएशन में लेते हैं, नेचुरल सिनेरियो में लेते हैं. एंड इमेजिन समबडी हु इज कैरिंग द इन्फेक्शन. जो इन्फेक्शन कैरी कर रहा है, जितना हम उससे दूर रहेंगे, जितना हम उससे एक डिस्टेंस रखेंगे, उतना कम चांसेस है कि उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स मेरे को टच करेंगे. क्लियर? I hope you understand the importance of this task. So you understand the fact that keeping the distance from the person who is carrying the infection will reduce the chances of spread of infection, because the respiratory droplets won't directly infect me. वो मेरे को directly infect कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो मेरे पास आएंगे नहीं. Clear? So that is one, जिसको हम बोलते थे keep the distance और infection prevention distance, या जिसको लोगों ने social distance बोला. दूसरा हमने बोला कि मास्क. हम मास्क यूज करें. मास्क से भी प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन को. अब मास्क की इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? मास्क की इंपॉर्टेंस ये है कि हम हर जगह इस कीप द डिस्टेंस को या प्रिवेंशन को, इस सोशल डिस्टेंस को, इन्फेक्शन प्रिवेंशन डिस्टेंस को यूज नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे सिनारियो में हम मास्क को यूज कर सकते हैं. मास्क विल बी एन एडिशनल एडवांटेज, वो बहुत अच्छी एडवांटेज होगी. तो जब भी हम घर से बाहर निकले, जब भी हम क्राउडेड प्लेसेस में जाए, तो हमको मास्क पहनना चाहिए, because that is going to be of an additional advantage in addition to keeping the distance. So mask is always of an advantage. मास्क की बात हम नहीं करेंगे, किसी और वेबिनार में करेंगे कि कितने मास्क होते हैं, कौन सा मास्क पहनना चाहिए. We won't go into the details of, because we stick to what students should be doing. तो अब आपने क्या करना है, पहले टास्क को हम उसी टास्क से हम इन्फरेंस लेंगे, उसी टास्क को हम फिर से यूज करेंगे. अब जो दीवार थी जिसको हम गीला करते थे, उसके सामने हमने एक कॉटन का कपड़ा रख दिया, चाहे वो सिंगल लेयर कॉटन कपड़ा हो, डबल लेयर कॉटन कपड़ा हो,
या ट्रिपल लेयर कॉटन कपड़ा हो। सो हम किसी अपने पेरेंट को बोलेंगे, मदर को बोलेंगे कि एक हाथ से आप कॉटन का कपड़ा को पकड़िए एक तरफ से, और फादर को बोल देंगे या ब्रदर को बोल देंगे, एल्डर सिस्टर को बोलेंगे कि यू होल्ड द कॉटन क्लॉथ फ्रॉम द अदर साइड एंड रिपीट द प्रोसेस। इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे कि मैं बहुत नजदीक से 1 फुट की डिस्टेंस पे पानी में हाथ डालूंगा एंड देन वाटर ड्रॉपलेट्स को फ्लिप करूंगा। वैसे ही काम 2 फुट पे करूंगा, 3 फुट पे करूंगा, 4 फुट पे करूंगा। सो व्हाट डू यू सी? You will see that the intensity of water droplets falling and that on that wall has reduced. ये मास्क यूज करने से, ये कपड़ा यूज करने से, कॉटन क्लॉथ यूज करने से क्या हो रहा है कि उस दीवार पे जितने वाटर ड्रॉपलेट्स पहले पड़ रहे थे, मेरे फ्लिप करने से, मेरे हाथ के फ्लिप करने से जितने ड्रॉपलेट्स पड़ रहे थे, उसकी जो संख्या थी, उसका जो काउंट था, वो कम हो रहा है। सेम विद रिगार्ड टू मास्क। जब मैं मास्क पहनता हूं तो मैं जितने रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स अपनी बातों से, अपने गाने से, अपनी सिंगिंग से, अपने खांसी से या अपने खांसने से या अपने छींक से बाहर फेंक सकता हूं, उसके नंबर्स, उसका काउंट कम होता है, राइट? सो वंस यू रिड्यूस द काउंट, you reduce the chance of transmitting the infection. Clear? So one, we reduce we keep the distance. एक से दूसरे को जो बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम दूर रखेंगे, एक से दूसरे की दूरी बनाए रखेंगे। और दूसरा, हम प्रेफरेबली मास्क यूज करेंगे। मास्क यूज करने से क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मेरे जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, वो उनकी जो इंटेंसिटी है, उनका जो काउंट है, वो कम हो जाएगा व्हेन आई कफ, आई टॉक और आई स्पीक। पर मेरे लिए रेस्पिरेटरी मास्क जो हम फेस मास्क यूज करते हैं, उसका एक और फायदा होता है। मैंने कहा था कि 2 तरीके से इन्फेक्शन होता है। एक तरीका मैंने बोला कि ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है, मतलब कोई खांसता है, कोई छींकता है, तो वो छींक और उसकी खांसने की जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है मेरे फेस पे पड़ गए। अब दूसरा तरीका ये होता है कि मैंने जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स थे जमीन पे गिरे, मैंने उनको छुआ और वो अपने मुंह या अपने नाक पे लगाया। जब मैं मास्क लगाता हूं, when I wear a mask, the chance of touching my face and mouth are reduced. मैंने फेस पे मास्क लगाया, उसके बाद मैं अपने नाक या मुंह को कितनी बार खुजालूंगा, मतलब they are all covered. There's a very little chance that I, after touching a surface, will touch my face. So that's how masks also help us in preventing the transmission of infection. Besides the fact that it reduces the count of respiratory droplets that go into the atmosphere. राइट? तो पहला टास्क हमने सीखा कि वाटर विफ को हमने जनरेट किया, उसके बाद देखा जितने हम दूर जाएंगे दीवार से, उतनी उसकी काउंट, उसकी इंटेंसिटी, उसका स्प्रेड छोटा हो जाएगा। दूसरा, हमने देखा कि जब हम एक कॉटन वॉल बीच में लगा देते हैं तो उसकी इंटेंसिटी और कम हो जाती है, राइट? तीसरा बात जो है, तीसरी एग्जाम्पल जो मैं आपको दे दूंगा, वो है विद रिगार्ड टू हैंड वॉशिंग। ये आपने बहुत बार सुना होगा इसको। आपने अगर आप टीवी देखते होंगे तो टीवी में इसको लेकर बड़े सारे एड्स भी आते हैं कि जब तक ये गाना खत्म नहीं होता तब तक अपना हैंड वॉश करते रहो। दिस इज वेरी कॉमन। और बड़े सारी जो कंपनीज है उनका धंधा इसी पे चल रहा है, इन साबुनों पे। और हाउ इज हैंड वॉश इंपॉर्टेंट? हमारे लिए हैंड वॉश इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अगर इस वायरस को देखते हैं, अगर हम इस कोरोना वायरस को देखते हैं, तो कोरोना वायरस की एक स्पेशलिटी है जो इसके लिए थोड़ी वीकनेस भी बन गई है। वो है इसकी जो बाहर की कवरिंग है, वो फैट कवरिंग है, लिपिड कवरिंग है, मतलब फैट की बनी हुई इसकी बाहर की कवरिंग। मान लो ये वायरस है अंदर, इसकी जो बाहर की कवरिंग है वो फैट की बनी, ठीक है? सो अगर हम उस फैट कवरिंग को तोड़ देते हैं तो हम इस वायरस को एक्सपोज करते हैं और ये वायरस मर सकता है। हैंड वॉशिंग उस फैट कवरिंग को तोड़ने में हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग दैट फैट कवरिंग व्हिच इज कवरिंग दिस वायरस। हाउ डज इट डू दैट? कैसे करता है ये? तो आप एक काम करेंगे, आप अपने किचन में जाएंगे, अपने मदर अपने फादर को बोलेंगे कि आपके हाथों में थोड़ा सा तेल लगा दे। पुट सम ऑयल ऑन योर हैंड्स और पुट सम ग्रीस ऑन योर हैंड्स और पुट सम घी ऑन योर हैंड्स। आपके हाथों पे ऑयल, घी या ग्रीस लगा दे। बोलो उनको कि थोड़ा सा ग्रीस लगा दे। उसके बाद क्या करेंगे? पहला स्टेप आप यूज करेंगे कि नलके का पानी खोला, ओपन द टैप, और अपने हाथों को उसके पास ले जाएंगे। उस हैंड को जिसमें आपकी ग्रीस लगी है, ऑयल लग गया है, उसके सामने ले जाएंगे और आप उसको धोने की कोशिश करेंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट द वाटर फ्लोज ओवर योर ऑयल और ग्रीस, वो उसके ऊपर से ही चला जाएगा। इट डजंट मिक्स, क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इमिसिबल एंड मिसिबल लिक्विड्स के बारे में पढ़ा होगा। तो आप देखोगे वो उस ग्रीस या ऑयल को
नहीं मिटा पाता, नहीं उठा पाता है। नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू डू इज दैट यू पिक अप अ सोप। आप दूसरा काम क्या करेंगे, साबुन उठाएंगे और साबुन को हाथ पे लगा देंगे और उसके बाद क्या करें, जस्ट लगा देंगे हाथ पे, उसके बाद पानी से धो लेंगे। तो आप देखेंगे कि सम पार्ट ऑफ योर ग्रीस और सम पार्ट ऑफ योर ऑयल और सम पार्ट ऑफ योर घी गेट्स वाइप्ड ऑफ। कुछ आपके हाथों से छूट जाता है, धुल जाता है आपके हाथों से, बट स्टिल सम पार्ट ऑफ इट रिमेन्स ऑन योर हैंड। फिर आप देखोगे कुछ फिर भी रहता है, थोड़ा आपके हाथों पे फिर भी रहता है। तीसरा स्टेप में आप क्या करेंगे, आप फिर से साबुन लेंगे और अपने हाथों पे लगाएंगे और एक जाग जनरेट करेंगे, लादर जनरेट करेंगे जिसको बोलते हैं। थोड़ी देर इसको हाथों को रब करेंगे, सारे पोर्शंस में रब करेंगे और एक लादर जनरेट करेंगे या एक जाग जनरेट करेंगे। थोड़ी देर धो के एक जाग जनरेट करेंगे और उसके बाद इसको धोने की कोशिश करेंगे। You will see that once that jug is generated, once the lather is generated, you will see that the hands are washed completely of the grease, the grease or the oil or the ghee. जो आपके हाथों में घी लगा था, तेल लगा था या ग्रीस लगी थी, वो सारी की सारी धुल गई जब आपने थोड़ी देर हाथ में साबुन लगा के उसमें एक लादर जनरेट किया या एक जाग जनरेट की, सारे पोर्शंस में धोया। And when you do that process, you will realize that the entire hand is become clean of that ghee or oil. आप नोट करिए कि पहले जब आपने हाथ धोया पानी के समय तो आपको कितना टाइम लगेगा, इट मे बी 5 seconds, 10 seconds। जब आपने दूसरी बार साबुन के साथ धोया तो मे बी अनदर 5-10 seconds, 20 seconds। जब आपने जाग जनरेट की तो आप देखिए कितना टाइम लगा आपको टोटल प्रोसेस में, पानी लेके साबुन लगा के सारे कोनों में जाके आप देखिए कितना टाइम लगा आपको। सो मे बी यू विल टेक मोर देन 40 to 50 seconds, 40 से 50 सेकंड लगेंगे आपको इस सारे प्रोसेस को करने में। सो दिस 40 to 50 seconds शुड बी द टाइम टू वॉश डेली टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। इस 40 से 50 सेकंड से ज्यादा का टाइम ही उतना टाइम होना चाहिए जिससे आप ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर? सो इफ यू कैन रब ऑफ the oil in your hands in these 40 to 50 seconds, you are very likely to rub off the virus on your hands that has inadvertently been picked by you while touching surfaces which were contaminated by an infected organism. Clear? So ये तीसरा स्टेप हो गया। So पहला हमने किया पानी को फ्लिप करने वाला, दूसरा हमने कॉटन क्लोथिंग यूज की और तीसरा हमने हैंड वॉश के स्टेप्स को देखा कि कितना टाइम लगता है हमको अपने ऑयल या ग्रीस को वॉश करने में। चौथा चीज जो मैं आपको एडवाइस करूंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम यू हैव सम अमाउंट ऑफ फ्री टाइम, आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसको आप प्रोसेस में ला सकते हैं, एंड इट विल ऑलवेज बी एडवांटेजेस टू योर फैमिली, आपकी फैमिली के लिए बहुत एडवांटेजेस होता है। और इसको मैं एडवोकेट कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, इसको मैं बोलता हूँ कॉन्टैक्ट लिस्टिंग। ये बड़ा अच्छा सा सिंपल सा काम है। आपने क्या करना है, मान लो आपके घर में 4 या 5 लोग हैं, 4 or 5 people in your family. You have a grandfather, you have a grandmother, you have a father, you have a mother, a sister, a brother, uncles, जो भी आपके घर में है, उनसे पूछना है कि आप आज कितने लोगों से मिले। उनको जस्ट पूछिए आप आज कितने लोगों से मिले। They may not be able to tell you the exact numbers, but वो आपको रफ आइडिया दे देंगे कि आज मैं 25 लोगों से मिला, 20 लोगों से मिला। रिपीट दिस प्रोसेस विद एवरीबडी। जो भी आपके घर में लोग हैं उनके साथ इस प्रोसेस को रिपीट करिए। मतलब अपने ग्रैंडफादर से पूछिए आप कितने लोगों से मिले, अपनी ग्रैंडमदर से पूछिए आप कितने लोगों से मिले, अपने ब्रदर से पूछिए आप कितने लोगों से मिले, अपने फादर से पूछिए, अपनी मदर से पूछिए, ठीक है, और अपने अंकल्स हैं तो उनसे पूछिए। ये आज करिए, कल करिए, तीसरे दिन करिए, चौथे दिन करिए, 5वें दिन करिए, छठे दिन करिए, 7वें दिन करिए। सो फॉर नेक्स्ट 7 days this is the process for you, this is the work for you, that you will list the number of contacts coming in contact with each member of your family. आपके घर में जितने भी लोग हैं उनके कांटेक्ट में आने वाले कितने लोग हैं। अब आप सिंपल सा assumption मान के चलिए कि आपके घर में 2 ऐसे लोग हैं जो ज्यादा इन्फेक्शन प्रोन है, जिनको ज्यादा खतरा है इस बीमारी से। एक आपके बुजुर्ग, आपके एल्डर्स, आपके फैमिली में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो, और आपके सिबलिंग्स मतलब जो छोटे बच्चे होंगे, आपके 10 साल से छोटे के बच्चे, 60 साल के ऊपर के लोग आपके घर में जो होंगे वो थोड़े से ज्यादा वल्नरेबल है इस बीमारी को एज कम्पेयर टू एडल्ट्स, मतलब 20, 30, 40 साल के लोगों से ज्यादा कंपैरिजन में वल्नरेबल है। तो आपने इनकी 7 दिन की एक देख लिए कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इनका एक एवरेज निकालिए। तो मान लो
आपके जो ग्रैंडफादर है हर दिन 10 लोगों से मिलते हैं तो उनकी एवरेज कॉन्टैक्ट्स 10 है। आपकी ग्रैंड मदर हर दिन 5 लोगों से मिलती है तो 7 दिन का एवरेज 5 है। आपके फादर हर दिन 50 लोगों से मिलते हैं तो उनका एवरेज 50 है। आपकी मदर हर दिन 20 लोगों से मिलते हैं, उनका एवरेज 20 है। Now, once you have done this, you have put this on your journal. Journal में आपने खाना बनाया, grandfather average 10, grandmother average 10, father average 50. आप उनसे एक सवाल पूछिए, क्या आपके ग्रैंडफादर का इन 10 लोगों से मिलना जरूरी है? Is it necessary? अगर ये इन 10 लोगों से नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? Will it hamper the financial condition of your family or the ethical conditions of your family? अगर ये आपके घर में जो आर्थिक रूप से तंगी करा सकता है, मतलब आपके यहाँ जो पैसा आता है, इनकम जो आती है वो कम हो जाएगी, या इनके जो जिन ये 10 लोगों से मिले वो इतना जरूरी है कि अदरवाइज इनके बारे में अच्छा नहीं सोचा जाएगा। सो आपने ये देखना है कि ये 10 लोगों से मिलना जस्टिफाइड था, आपके फादर का हर दिन 50 लोगों से मिलना जस्टिफाइड था, आपके ब्रदर का, आपकी सिस्टर का, आपके सिबलिंग का 20 लोगों से मिलना जस्टिफाइड था या नहीं था। सो वंस यू डू दैट कॉन्टैक्ट लिस्टिंग, आप घर में बैठो एंड टॉक टू योर फैमिली, अपनी फैमिली से बात करो और उनको बोलो कि वी नीड टू कट डाउन ऑन दिस। सो माय ग्रैंडपेरेंट्स नीड टू कट डाउन ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु कम इनटू कांटेक्ट विद, बिकॉज दे डोंट नीड टू, उनको जरूरत नहीं है। दे आर नॉट देयर फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, दे आर नॉट देयर फॉर एथिकल इंडिपेंडेंस। तो उनको बोलो आप घर में ही रहो, ज्यादा मत निकालो, आप बहुत ज्यादा लोगों से मिल रहे हो। Same with regard to your parents. Why do you need to interact with 50 people? Do you really need to interact with 50 people? So if you carry this message and do this exercise on a routine basis, you are 100% likely to reduce the chance of picking infection through crowding or through interactions. जो ज्यादा इंटरेक्शन से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्राउडिंग की वजह से जो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं उसको रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये चौथा काम होगा आपके। आपने एक जर्नल बनाया और जर्नल में लिस्ट किया, उसके बाद आइडेंटिफाई किए दोज हु हैव हायर कॉन्टैक्ट्स एंड दोज हु हैव लेसर कॉन्टैक्ट्स। जो हायर कॉन्टैक्ट्स है उनके साथ बैठ के बात की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत है। राइट, दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट स्टेप ऑफ दिस, एंड द लास्ट स्टेप इज इंफॉर्मेशन। अगर आप सुनते भी होंगे और आपने पढ़ा भी होगा, पेरेंट्स भी बात करते हो, हमारे पास आज की डेट में 2 पैंडेमिक्स है। एक तो पैंडेमिक बिकॉज ऑफ कोविड-19 है और एक इंफोडेमिक है, मतलब इंफॉर्मेशन का पैंडेमिक है। ये तो वी शुड बी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट दैट दे हैव रिमूव्ड अ फ्यू सोशल मीडिया एप्स व्हिच वर स्प्रेडिंग ऑल टाइप्स ऑफ मैसेजेस। अदरवाइज हमारे पास जो फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही थी वो अजीब सी थी। हमने एक स्टडी की थी आज से रफली 3-4 साल पहले, और उसमें हमने देखा जो इंफॉर्मेशन एक बड़े कॉमन प्लेटफॉर्म पे आती है, उसमें से 50% of the information was being given by those people who were not capable of transmitting that information. कहने का मतलब है कि मतलब अगर पीडियाट्रिक की बीमारियों के बारे में बात करनी है, अगर बच्चों की बीमारियों के बारे में बात करनी है तो आई वुड प्रेफर डॉक्टर रवि टू टॉक अबाउट इट। अगर पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करी तो आई वुड प्रेफर मी टॉकिंग अबाउट इट। बट अगर न्यूरोलॉजी के बारे में बात करने की जरूरत है तो आई वुड प्रेफर ए न्यूरोलॉजिस्ट टू टॉक अबाउट इट। हम न्यूरोलॉजी को रिलेटेड कुछ एनालाइज कर रहे थे कुछ डेटा को, एंड वी saw that 50% of this data was put on the social media platform by people who were far off from neurology. Neurology तो छोड़ो, basic MBBS भी नहीं थी, basic doctors भी नहीं थे। So everything that is available on the internet is not good, is not true, is not valid. So आप क्या करो, आपने अपने फादर, अपनी मदर, अपने ब्रदर से पूछना है कि आपके पास 3 सबसे कॉमन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। कोविड-19 डिजीज को लेकर जो सबसे कॉमन 3 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, लिस्ट देम। अगर वो बोलते हैं मेरा सबसे पहला इंफॉर्मेशन टीवी है, दूसरा गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, तीसरा मेरा इंफॉर्मेशन बुक्स है, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी विद इट। बट अगर वो बोलते हैं कि मेरा पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फेसबुक है, दूसरा व्हाट्सएप है और तीसरा टिकटॉक था, तो आई वुड बी अनहैप्पी विद इट। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट लिस्ट करना है what is the most common source of information available with your parents with regard to COVID-19 disease. उसको लिस्ट करिए और उसको बैठ के अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स से डिस्कस करिए whether these sources of information are correct, they are valid, whether we can trust them or not. If they are not, अगर वो trustable नहीं है as per your teachers, as per your parents, you should avoid using those information platforms. Clear? So we should avoid using those information platforms which are not valid, have not been known to spread correct information. Clear? So these are the 5 things that I
wanted to speak about. One, infection prevention distance. The example is there. Second, wear the mask. Example I have given. Hand washing. Example I have given. Fourth, contact listing. Again, I have told you how to do that. And fifth is preventing information pandemic and sticking to correct and valid information. That primarily ends what I was to talk about. But remember one thing. This pandemic is not going to go away tomorrow. ये बहुत गलतफहमी होगी हमारी, हम ये सोचे कि ये कल जाएगा, 6 महीने में जाएगा. Because it's a pandemic. Pandemic का मतलब होता है which transcends geography or time. Time और geography को transcend करता है, but goes beyond geography and time. So it may stay with us for a long period of time. हमारे साथ बहुत देर तक रहेगा. So we need to stick to preventions. हमने preventions को ही adopt करना पड़ेगा. ऐसे भी एक सिंपल सी कहावत है, जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी में, बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो मैंने उनको बोलता हूँ कि सिविलाइजेशन को 3 ही चीजों ने बदला है. मतलब सिविलाइजेशन 3 चीजों के आसपास ग्रो की है. जो भी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो 3 चीजों के आसपास ग्रो की है. 1, इकोनॉमी, दैट मीन्स पैसा. ठीक है. सेकंड, वॉर, लड़ाइयाँ, जमीन के लिए लड़ाइयाँ. वॉर, इकोनॉमी, वॉर एंड एपिडेमिक्स. 3 ही चीजें सिविलाइजेशन को बदलती है. इकोनॉमिक्स, वॉर एंड एपिडेमिक्स. तो सोचो वो 3 चीजें जो सिविलाइजेशन को बदलती है आज की डेट में, उनमें से एक हमारे पास है. तो ये कितना इंपॉर्टेंट है. हमको सजग रहने का, अवेयर रहने का हमारे लिए कितना जरूरी है. सो वी मस्ट बी अवेयर. वी नीड नॉट पैनिक एज फार एज वी आर यूजिंग, as long as we keep using preventions. जब तक हम preventions को यूज करेंगे, we need not panic. Stay informed रहे. जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है उसको प्रोक्योर करें. टॉक टू टीचर्स, बेस्ट एग्जांपल है. अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं पता है तो टॉक टू टीचर्स, गो ऑन टू स्कूल वेबसाइट्स, these social school platforms, inquire from teachers. They can get you valid information and then distribute it to you. So that's the way to go about in this pandemic. With this, I thank you. Thanks a lot for listening. And if there are any questions, I'm willing to answer them. If you want to ask me now, I'm ready to respond to them. You can't ask me now. You may have my phone number. Call me. I am ready to respond to them. Thank you. Thank you. Well, this session actually, made me to learn so much. Definitely, such sessions has to be taken not only for the children. You have to educate even the other parents. They are the role models for many of the children at home and back at schools also, especially even teachers. We have few questions, and questions are like, sir, this is for Dr. Sunil Raina. When and how school should be reopened? What is the right time to open up the schools? Now, this is something that is that my daughter even asks me. When is the time to open the schools? Ideally, I would not want the schools to open unless and until we see that there's a plateauing of the infection. Now, how do I see it? If you ask me this, if we see that this infection is tailing off before October, अगर ये अक्टूबर से tail off हो रहा है infection, then we can think of opening schools. But if it does not tail off before October, I would say that the schools should not be opened this year. It is very important that this infection, the pandemic, this epidemic in India at least tails off before October. Because if we enter into winter months with this epidemic, it is going to keep rising. It won't fall. And I don't want school students to be sent on the rising arm of an epidemic. School students को कभी भी rising arm पे नहीं भेजना चाहिए. Falling arm के end पे आप उसको भेजने की सोच सकते हैं. But as I said, if we see it tailing off in terms of simple say assessments है, जैसे अभी आज की rate में my proportion of deaths is around 2.6%. My proportion of deaths. If I am able to bring it to less than 1% in another 2-3 months, अगर मैं 2 महीने में इसको 1% से नीचे ला सकता हूँ, तब मैं schools खोलने की सोच सकता हूँ. Not that we should open, सोच सकता हूँ. But before that, no way possible. And there is a follow-up question on the same thing, Dr. Raina. What questions has to be asked from parents to the school authorities? Like, which precautions they have taken, what are the preventative measures they have taken, whether their teachers have been well informed, how to curtail the contamination here.
Do you have to suggest any FAQs for this? Frequently asked questions. Primarily, why I am averse to students not going to school. There are one or two reasons. One, by nature, students are like to intermingle. वो एक दूसरे से मिलना चाहेंगे. Now, if you cut down on that intermingling, अगर आप स्कूल के बच्चे को बोलेंगे कि आप अपने फ्रेंड से नहीं मिलो या मिलो भी तो दूर से मिलो, मास्क पहन के मिलो, you are curtailing his freedom and you are more likely to harm him than give him benefit, right? Otherwise, अगर आप उनको ऐसा कर सकते हैं कि जैसे क्लासरूम में जाए, you increase the distance of the desks, but the fact is that they have to move out of the classroom. How do they move out of the classroom? So the precaution should be that every student who enters the school, once he enters the school, you check for fever, you ask him to use the hand sanitizers or hand wash, ask him to wear the mask, have his history known for last 4 or 5 days, and then when he enters the school, uses the classroom, uses the same precautions. But I personally see it very difficult. If you look at the world scenario, the schools in our setup are very crowded. You may be able to use this model in a few small schools wherein the numbers are small, but schools in our place are, you have a minimum batch of 50 students. How do you address that problem? And your school rooms are small. Majority of students still go to a setup which is not as fancy in terms of providing these opportunities as others will have. And once these students go back, they will always carry the infection. So there has to be a policy, although there are policy guidelines with regard to school openings, they will come up in future time, but I am averse to it. To be very honest, I am averse to it. Agree. Thank you, Dr. Raina. I have a question to Dr. Ravi Kiran also. Sir, many parents are now asking, what is the right nutrition during the lockdown period for your pediatric patients? Right. Is this directed for me? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Am I audible to you? Okay. Am I audible? Yes. I have some signal issues. We can. Yeah, you are audible. Suddenly, I had some bandwidth issue. If I'm audible, I'll continue. You are audible now, sir. Okay. Fine. Okay. Yeah. This is one thing we have to understand about the pandemic and the nutrition is that a few things for kids. The least affected in this, in terms of the severity of the disease and the suffering incurred by that, is that the severity is much lesser in kids as compared to the adults till now. That doesn't mean that we throw off our guards, but it means that the way we care for our children should not differ too much than what we used to do before this. Am I still with you? Hello? Okay. So it's not too much different than what we used to do. In that case, we are to continue our nourishment for our kids the way we used to do it before. And we should also make sure that the regular intake of carbohydrates, proteins, and vitamins, what we generally give in terms of the diet, is continued. The next thing we have to understand here is that, am I audible? Okay. So the next thing here is that Corona has done some good to us. What is that? We have begun to rethink of the way we live. We are rethinking the way we interact with our kids and the way we live with them. So because of this social distancing and a mask behavior, we are seeing very less number of respiratory cases, and because of reduced eating of the junk foods or reduced culture of eating in malls, theaters, and contaminated foods, we are seeing a reduction in the number of gastroenteritis cases in kids also. So we're seeing that the hospital inputs are lesser, not because of the fear of Corona. If the kid is sick, they will definitely come, be it Corona or no Corona. The people as such are not coming mainly because they are seeing that the cases itself have come down because of these sane practices or the sanctified practices which we are undertaking these days. So definitely the nutrition is much better nowadays because people are cooking at home, they are thinking what they are cooking, they are analyzing what they are cooking and then doing consciously. So a holistic cooking is very important.
a food which we often say food pyramid based with a lot of fruits, vegetables, proteins, and then the carbohydrates, then the fats. So we have to stick to these basics of nutrition which we always knew. Not that we have to change the way we eat our foods, but some things that are really helpful would be we have to take some tips in terms of nutrition for, like, say, kada banana. Like, home available spices have been found to be very beneficial, and as also suggested by our Ayush colleagues, it is home available kashaya, we call it kashaya in Kannada or kada in Hindi. These things are definitely beneficial to improve our overall immunity, if we may call so. And so general nutrition principles will not change. You continue to give the baby the adequate amount of proteins, calories, as we are always giving. Vitamin C is known to be beneficial, but then we are overstating that to the extent that we are not getting adequate amount of vitamin C in the pharmacies when it is required. And zinc is again hyperinflated demand now. We have to have adequate amount of these zinc, vitamin C, vitamin B complex, vitamin D, all this. But then that doesn't mean that we just go running behind these things to the negation of the regular foods. So everything has its place, and now also we continue to take care like we used to do. Thank you, Dr. Ravikiran. And the follow-up question again for you only. Parents are now are confused because there is no school, no playground. People are scared to leave the children outside to play. How do you suggest a child to involve physically within the house premises? What parents can actually become a role model to indulge them in like physical activities? Because the present day children, the generation are engaged with mobile and other things. Okay, yeah, this is a very good question, very relevant question in the present situation. See, what is important is that we don't compromise on the basics of the child care. Like, again, children need a lot of fun. Children need a fair amount of physical activity. Outdoor physical activity is better, but then we have to use our discretion and our intelligence in allowing them outside. We cannot just allow them everywhere, but at the same time, we cannot just keep them contained under the four walls and the roof all the time. So my suggestion about activity, physical activity, and also Dr. Raina was very well putting about the school. Yeah, their basic behavior is they want to mix. If you allow 4 kids to play in your corridor, definitely they'll make a mess of the whole thing and they'll intermix and everything will be gone to, like, say, no control would be there. At the same time, we should also understand that children are not symptomatic. Most of them are asymptomatic carriers. So the risk is not for the kids as such, but the risk is more for their grandparents. Parents have the immunity to manage themselves. Like, say, even if they get a corona, they can fight it out. The grandparents, on the contrary, become the passive victims of the whole situation. So withholding the kids from intermixing with we lost you, Dr. Ravikiran. I don't want them to just run over, jump over, and hurt themselves. So caution is always on. So some simple things would be teaching static exercises. Static exercises like spot jogging, skipping, and then yogasanas. Yogasanas are like long forgotten, but then probably it's time to rejuvenate that also. Some simple techniques of yogasanas wherein they can stretch themselves, wherein they can flex themselves. So these things will be very important. And I would still try to minimize or cut down the screen time wherever possible, because this has a very, very, very bad tendency of addictiveness. You give it a name of online play with chess, online activity class, you give it a name of online interaction with other family members in like a Zoom meeting, kids ultimately land up in an addiction mode. So I would keep all my caution on when I'm giving any kind of screen for a kid. So screen is still a big no. So I don't want them to, already we are seeing a lot of kids with watering eyes because of the excessive class, but then unfortunately we don't have a option of this right now. We cannot open the schools at this stage as Dr. Raina. Screen time is limited to what is required. That is the classes as of now. And then streaming should be better. If you have a streaming device, better stream it on your big screen and maintain the distance. Don't keep the screen very bright. Dim it a little so that it doesn't have a glaring effect on the kids' eyes.
So, and after that, so these things are very important to contain them and to keeping them in a good humor. So have fun. Dr. Raina told some very good hands-on ways of teaching the kids as to keep a safe distance. And similarly, sports activities, like say I do it, my son does it. I just tell him, he says, okay, this is a flat theory. So it doesn't appeal to them at all. You do it, they do with you. So my suggestion, yes, it is good for the whole family. I think this Corona has given a great opportunity to explore the family life as such. So we should inculcate good habits. It's probably the way our grandparents did it to our parents. We actually missed out on physical education, be it teaching your kid skills of mathematics or hands-on things. Yeah, I would focus on home education. Make them to learn how it's an activity also that gives them a sense of responsibility. They have to keep the room clean. They do a lot of folding their clothes. If they simple things, they are learning skills also. They are physically active also. They have a sense of achievement also. But then it's not simple. If you keep on drudgery mode, then they get off the hook very quickly. So you should keep them with good humor, have fun with them. Don't be all the time very boring with them. So these things help. Thank you, Dr. Ravi Kiran. रैना सर, आपके लिए एक क्वेश्चन है. मैडम एक पूछ रहे हैं, हाउ डज द वायरस स्प्रेड इनसाइड आवर बॉडी इफ वंस एंटर? सो अनफॉर्चुनेट टू आस्क दिस. It's a slightly tricky question in a way. Now, how does it enter the body? As I said, the mode of entry is simple. If it is spread through the sneeze or if it is spread through the cough, it has to enter your respiratory tract. So respiratory tract में enter करेगा, मतलब through your nose enter करेगा, even it through your mouth करेगा, तो it will enter your respiratory system. अब जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या जैसे हमारे लंग्स में एंटर कर गया या जो लंग्स को लीड करते हैं ब्रोंकस या उनमें एंटर करेगा, तो इसकी लाइनिंग में कुछ सेल्स होती है और उन सेल्स के साथ इसका लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है. द लॉक एंड की मैकेनिज्म फिट्स थ्रू द विद दोस सेल्स, एंड व्हेन दैट लॉक एंड की मैकेनिज्म फिट्स, it opens up the cell and that it gets into that cell and starts a process of infection in the body. It doesn't spread. It doesn't. Whether there is a secondary viremia because of this virus, we are still not sure about it. I am not very sure about secondary viremia caused by this virus. At this point in time, what it does do is that it gets in and it opens up the cell and starts chemical process. Sometimes some people define it as cytokine storm. So it starts a chemical process which leads to a systematic disease. There is no secondary viremia because of this. So virus as such does not spread, but it leads to a systemic disease through those mediators. Thank you, Dr. Raina. I think we have so many questions, but I'll take one question very seriously, and it is for Dr. Raina. As a community medicine professor and prevention diseases professor, do you suggest government to bring in a sort of syllabus to make school children learn the hygiene way of living in their primary education system? This is something that is very close to my heart. Now, what most of the CBSE schools have done, well, this is something that I've again worked up a few years back. I was working on disaster management. I was publishing a paper on disaster management. We had done some work in Nugra Shok Valley of Ladakh, and we published a paper in one of the best journals on disaster management. In that, what we learned is that schools in India have topics with regard to disaster management, right? Now, and whether these classes on disaster management are taken care of properly or not, that is secondary part of it. But what I realized was that the marks allotted to this topic on disaster management was 5 marks in CBSE exams for 10th, very small. So if you ask a student to talk about or read about disaster management, his chances of picking up disaster management during this study time is very less. Same with regard to hygiene or health hygiene. Health hygiene was a part of school curriculum when my elder brother was a student. I don't know whether you have gone through that phase of reading. Now, hygiene was a
part of book was a book as such a book in 10th class. It was a part of the syllabus in 10th class. And it used to have some important amount of marks attached to it. But again, as I said, if you restrict it to exams, marks, then it's not going to serve a purpose. Now, hygiene, health awareness, health education should be ingrained within the student's life from day one. It's something what they do in Japan. What Japanese teach their kids when they enter into school is not about A, B, C, D, E, F, G. They don't teach them what do you learn about languages, what do you learn about mathematics, or what do you learn about other geography, history. They teach them how to prevent yourself from an earthquake. First thing that they teach them when they enter the school, first thing that they teach them is how do you prevent yourself from an earthquake, right? This is something that is ingrained in them from day one. Same should be the pattern followed in India. This infodemic or this pandemic should teach Indian government a way of inculcating in young kids awareness with regard to infections, awareness with regard to diseases from day one. In fact, the way Dr. Ravi was saying, if you look at schools, the most common thing available just outside the school will be a burger. The most common thing available within the canteen of a school will be a hot dog. But schools have not been able to use this as a model that would have changed these behaviors. So unless and until we inculcate health awareness, health education as a part of human behavior through education from the grassroots, we won't be doing much. So instead of having it as a syllabus, we should be having it as a part of practice. It should be a part of school practice. The way we used to do in our days, we used to have half an hour every day attached to the daily research or daily rehearsals or daily exercises. Same should be with regard to this. There should be half an hour every day devoted to awareness with regard to health conditions. That is something that is going to help. Thank you very much, Dr. Raina. It was a very, very wonderful session. We have 2 more minutes to conclude this. I request Dr. Ravi Kiran to conclude this session. Then I will say about the next webinar. Dr. Ravi Kiran, sir. Yes, thank you. It was an excellent session by Dr. Raina. Like more importance to hands-on things than lot of theory, and it has given a lot of insight what the parents can do to educate their kids, and the parents definitely answer these questions themselves also, because inculcating a thought process is more important because everything cannot be told in a 1 hour session. So that's why Dr. Raina has given a very explicit 5-point plan for how to approach this, and like what the havoc the media is creating, and do we really need to know every bit of news what a media gives? All this has been very well addressed. So the parents are suggested to like say go a little deeper and devise their own ways, their particular kid in the way their own kid demands, to satisfy their need for knowledge and need for right practices without overloading them with the media or the unnecessary fear mongering. So that the kids grow up healthy in spite of all this happening. We should not forget the psychological health of the kids with the present in the present frenzy what we are in. So Dr. Raina has given a very good platform on that. Thank you very much, sir. This was a wonderful session. Thanks for the whole team and the other coordinators of this team. Thank you very much. It was a very good session. Thank you very much. Of course, look forward to more of these things. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ravi Kiran, for accepting our invitation and sharing this webinar series here from Project Step 1. Thank you, Professor Sunil Raina. And we love to have you both again. This will continue. And dear Step 1ers and dear citizens, on behalf of all of you, I am thanking doctors and dear parents, teachers, students. Remember to follow the guidance given by doctors and not to panic. Follow whatever Dr. Sunil Raina has very, very clearly mentioned about from where you need to gather the information and believe those information. So kindly stay safe and stay home. Have a very happy Sunday and tune for next information or our webinar on 23rd, how to win over COVID from home. And you will receive an SMS from Project Step 1. So SMS
you have to follow is manage the social distance, SMS, wear a mask, and use sanitizer continuously. Happy Sunday to everyone. Thank you, doctors. We will meet again. Thank you very much.